कालिकायै नमः। गलत्रक्तमुण्डावलीकण्ठमाला महाघोररावासुदंष्ट्राकराळा विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुला कालिकेयम्। भुजे वामयुग्मे शिरोसिं दधाना वरं दक्षयुग्मे भयं वै तदैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारणं लसद्रक्तसृक्कद्वया सुस्मितास्य। शपद्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभेश चतुर्दिक्षु शब्दायमाना विरेजे। विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रिन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनाधिं सुराधिं मखाधिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामा यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्थात् भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। सुरापानमट्टा सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदाभिर्भवत्ते जपध्यानपूजा सुधादौतपङ्क स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दं शरच्चन्द्रकोटिः प्रभापुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्र कदाचित् विचित्रकृतिर्योगमाय न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्वृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा।